So today's topic is elastic load balancing. So ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और जॉब के पर्सपेक्टिव से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसको अंडरस्टैंड करना मैंने काफ़ी कोशिश की है कि जो भी इसके फीचर्स हैं लोड बैलेंसिंग उसको जितना भी सिंप्लीफाई कर सका ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड होना इसका बहुत ज़रूरी है कि इसके मेरे ख्याल एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे आपको एग्ज़ाम में. सिमिलरली व्हेन यू गो फॉर अ जॉब, so they will touch this area beside VPC and EC2. So this is the main topic as well. So think about load balancing. I'm going to draw these pictures for you. So mostly the communication between two devices on the computer, instance two, for example you are using your laptop or your laptop आप use कर रहे हैं end user, we call that client, or on the client mostly use access to the servers here is EC2 instance. So the way the communication happen कि client जो है ना वो request send करता है. For example I want to go to www.google.com. So this is the request I'm sending through the browser. The request है वो that will through the internet going to hit the web server in the cloud. Then this server going to send the response to the client. तो रिस्पॉन्स क्या आएगा कि उसको उसके ब्राउज़र के अंदर www.google की वेबसाइट जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगी. So this is called client server network. So this is what happens, sending the request, receiving the request. This process keep going. अगर वो किसी भी जब आप पहुंच गए हैं ब्राउज़र के ऊपर गूगल वेबसाइट के ऊपर, then you find some links over there. So you click on that link. So again when you click on the link you want the second page or third page, fourth page. Every time to click on the link, this is the thing happen. They send the request and they get the response. So let's see if we have more people accessing the same website which is hosted on a one EC2 instance. So what going to happen? पहले एक client जो था वो access कर रहा था, अब ज़्यादा clients access कर रहे हैं. तो what could happen? This is the question for you. क्या possibilities? So I think it could, there'll be a lot of traffic, but also there's a risk of the EC2 instance like not working or some. That's good. Another thing. Anybody else? Just do the servers can crash. Yes, what going to happen? सर मैं कह रही थी कि सर्वर क्रैश हो सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ना, सो इट कैन नॉट टेक द लोड इतने सारे डिवाइसेस का या ट्रैफिक का. That's true. So server crash. Okay. I think you could also get an error. Okay. I mean, you will get the slow response, right? So latency means low. So it's going to, you get for example, you send the request, you get your response going to be like slow because a lot of people have hitting the same server. So for example, this server has like a capacity of handling 100 connections. Right, so now we have a traffic of 110 people are trying to access. So it's going to affect all these things. It's going to not going to crash immediately, but it's going to, you will see the latency, you see the slow response. Error maybe if the web page is not available. So you will get the error when there's a crash, definitely. So this is going to happen. The slowdown, you will get a slow response. So these kind of things happen. So what could be the solution for this?
think of your day-to-day life. What's going to happen if this is the situation? What would you do? Well, Sir, I we think you can can, add more servers, maybe. Sorry, Zenith, go on. Go ahead, Nosheen. no, you can go on. I was just going to say we can add more servers and then obviously add like a elastic load balancer Okay. to kind of make sure that to kind of like distribute the load basically of the traffic and the requests. That's good. Zenith, you want to try something? Yes, sir. मेरे दिमाग में वो कैशियर की एग्जांपल आ रही थी. I remember in the first few lectures आपने कहा था कि अगर एक कैश काउंटर में बहुत सारा क्यू बन जाए तो हम दूसरा कैश काउंटर खोलेंगे ना. तो वो वाली इमेज आ रही थी मेरे दिमाग में. Just like अगर आप सुपरमार्केट में जाते हैं, बहुत सारी आपके पास सामान होते हैं और एक कैश काउंटर नहीं कर सकते. Exactly, yeah, this one. This was the image that was coming in my mind. Yeah, मैं ये कहना था. That's the reason I started actually asking the question. मैं देखना चाहता हूँ कि एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट होता ये है कि यू हैव टू थिंक लॉजिकली कि अच्छा इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, इसका ये हो सकता है. सो सी हियर वी हैव टू काउंटर्स, काउंटर 4 and 5 इज क्लोज, राइट? सो नाउ वी हैव मोर पीपल. सो लेट्स गोइंग बैक. So see, the counter 4 and 5 going to open, and this is how we're going to distribute the load among all these 5 counters. So this is in generic term, this is the solution. So you have to add more people, you have to add more systems, so that the load could be handled and distributed among all of these. So let's go to the next slide. So now you understand how to balance the load, right? So the load balancer is a computing architecture component. So what is talking about? See the logo on the right hand side. So this is the symbol of the load balancer. So this is the component. This load balancer is the component for distributing load across a cluster of nodes. So do you know what a cluster mean? Okay, and the nodes? Access points जहाँ पे terminal में कोई end user बैठा हुआ है या let's say clients, between clients में उनके 3 separate nodes होंगे. Cluster is a group of instances, group of EC2s. You have like a 5-6 computer, but those computers are serving the same function. For example, you have one server, you have 5 server who are hosting your website. Then you have 5 server who are hosting your application. So then you have other 5 server who are hosting the database. So this is 3 tier of net architecture actually telling you have a cluster of application, you have a cluster of web server, you have cluster of database. So these 3 kind of things. The second line said AWS cloud service called elastic load balancing, which provides a managed load balancer. What is managed load balancer mean? I think in the previous class I mentioned, when you see this keyword managed, that means this is the something you don't have to do. You don't have to do any coding for these services. This is available in the web services. This is being managed by the AWS. You just go ahead and start using it, just like SNS and SQS. So this is also one of that kind of a service which is 100% managed by the AWS. You don't have to manage it. So one way to ensure consistency is to balance the request load. So in the first slide I show you the request and response type of flow. So it's a request balancing the request they're receiving from the internet, from the network, and then they are sending across the all the servers who are participating in the load balancing. A load balancer is a mechanism that automatically distributes traffic across multiple Amazon EC2 instances. Very straightforward.
simple. So you don't have to do anything. It's going to automatically distribute. If you have a load balancer and behind the load balancer you have a 5 instance, it's going to distribute the traffic among those 5 servers. The elastic load balancing service allow you to distribute traffic across a group of Amazon EC2 instance. So in the coming slides you will see what exactly I mean. The group and cluster is the same thing. In one or more availability zone. So you have a server sitting in availability zone 1, and then you have some instance sitting in a availability zone 2. So you can send the traffic across. I have a complete 2 slides on that. So what is cross zone load balancing is. How does Amazon ELB works? So ELB is a abbreviation of elastic load balancing. This is the kind of thing they will be using in your exam and in your jobs interview. Traditionally, load balancing worked by dividing the incoming traffic equally among multiple computers. Simple, straightforward, so that every user request is processed faster. So in the first slide I showed there's a one instance and all the people, the clients are sending the request to that particular instance. तो उसके से क्या होगा कि वो traffic slow होगी. तो this is the solution of that. Solution is to have a ELB available. And in the case of ELB, the load balancer first check the health of the targeted instances and route the traffic. So think about that कि कोई बंदा आपके घर में है, वो अगर अनहेल्दी है, बीमार है, तो यू आर नॉट गोइंग टू टेल हिम व्हाट टू डू. कोई काम शाम उसको नहीं देंगे कि नहीं ये बीमार है इसको रहने दो. सेम कॉन्सेप्ट ये है कि क्या होता है कि जो सिस्टम है, जो इलास्टिक लोड बैलेंसिंग जो सर्विसेज है, ये क्या करती है कि ये जाके चेक करती है. लेट्स सी, अगर आपके घर में 3-4 मुलाजिम हैं और आप उसको यू आर द इंचार्ज हु इज़ गोइंग टू गिव देम अ टास्क, तो आप पहले सबका पूछेंगे कौन किधर है. आपको सबके नाम आने चाहिए, आपके जो घर के अंदर मुलाजिम है या आपकी कंपनी में मुलाजिम है. तो अगर उसमें से कोई एक आधा बंदा यानी कि बीमार है, तो उसकी जगह पे आप वही काम वो किसी और को दे देंगे. तो देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग दी हेल्थ चेक. लाइक यहाँ इस सिनेरियो में तो आप वर्बली पूछते हो कि फ़लाँ बंदा नहीं आया आज, तो वो कहेगा जी वो बीमार है. देन ओके, तो हु विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिज टास्क लाइक. तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में बिठाएं अपना कि जब हेल्थ चेक की बात आती है. तो सो आई हैव अ कपल ऑफ स्लाइड्स ऑन हेल्थ चेक. Additionally, it stops directing traffic towards any unhealthy instance. So obviously, you are not going to give the task to an unhealthy person. तो मैंने ये एक डॉक्यूमेंट भेजा था जिसमें मैंने कहा था तो आप लोग थोड़ा सा इसको रिव्यू करके आएँ. For because this is I'm just going to touch on this issue, this topic. The thing is, this is not a part of. This is completely a different area which call a virtual private network. उसके अंदर अगर if you want to be specialized in that area, then you have to learn all this. Simply ये है कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो, आप स्काइप यूज़ करते हो, आप ईमेल के लिए कोई ब्राउज़र खोलते हो, आप याहू मेल यूज़ करते हो, कुछ भी एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हो, वो एप्लीकेशन actually sits on the application layer, the first thing, which is layer 7. और जो फ़र्ज़ करें आपने ईमेल किसी को भेजनी है, जब आप ईमेल भेजते हो किसी को, that email has to go through all these layers from top to bottom. On the other hand, the person who is receiving the email, he will receive the opposite direction. He will get the email from here to here to here to here. So all these layers, and finally in the application layer, you will see the message. See, so sender is sending this way, and the receiver is receiving this way. तो इस हर layers का एक function है, जैसे कि application layer है. So this layer that directly interact with the
data from the user. For example, you are the user, you are typing the email, you open the browser and Gmail and you start writing it. So this is for you. So you are actually providing the data, or data जो है वो then is moved to the next layer, which is presentation layer. The primary responsibility of this layer is to prepare the data that it can be used by the application layer. So इसके दो functions हैं. एक तो अगर आप receive कर रहे हो email, so it's going to prepare the data so the application in your Gmail you can see the data. So data doesn't not, जैसे आप अगर कोई लिखते हो hello how are you, right? So this is not the way the message is going to process through these 7 layers. It is going to process a different way. It's going to bit and bytes. That will be converted in bit and bytes. तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको ना मैं ज़्यादा इस चीज़ में बताऊँ कि all you have to understand that every time you send the message, it has to pass these 7 layers from top to bottom. On the receiving end, it has to go from bottom to up. So the reason I wanted to show you this a little bit, because in the topic it is talking about what things are working on what layers. So for example, here say layer 6 translate data to binary and encrypt and decrypt. अगर आप किसी ने कभी किसी को फाइल भेजी हो जिसको अपने जिप फाइल भी कहते हैं, डिक्रिप्शन उसको कंप्रेस करके भेजते हैं, तो वो भी जो है लेयर 6 के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं. इसी तरह जो लेयर 5 है तो ये डिसाइड करती है, इसको हम कहते हैं लेयर 5 का क्या नाम है, सेशन. So what is session actually? Session is when you create a, let me show you. So for example, यहाँ पे एक client है, आप कनेक्शन कर रहे हो सर्वर के साथ. So this is the job of the session layer. Session layer actually its job is to open the connection or close the connection. This is his job with the receivers. यहाँ पर आपकी email receive होनी है, तो यहाँ से आप sender हैं, you are sending the email. So the connection between these two systems, to establish this connection, this is the job of the session layer. So session layer is also known as a handshake. So actually two systems, they handshake, okay, we are available for each other and I am preparing the message for you. So this kind of information they pass on to each other. So it's called session. Session has a time, like it's going to open the session connection and then it's going to terminate the connection between two devices. So these kind of information or this is kind of processing is happened at the layer 5th layer, which is called session layer. So I'm not, यहाँ तक ठीक है, मैं ये आपको समझ आना चाहिए कि this is every time you send or receive a file, a document, email, images, everything to each to the other computer, they have to go through this OSI model. So again, Can I just ask a question? Sure. Sorry. I'm in a class. Wait, sorry. So does the OSI model help us to understand which, or help us to decide which level? At which level of these we're going to use which type of load balancer? Yes, actually, you are not going to decide. Yeah. In the next slide, I will show you there's different kind of load balancer. Some of the load balancer, they work at the layer 5th. So layer 7th, and some of the load balancers they work at the level of what you call layer 4. So that's why I'm introducing this. So you will see there are classic there's called classic load balancer and application load balancer, classical and application, and then we have a network load balancer. So these three kind of load balancer, they work on different layer of this OSI model. That's why I'm just introducing this, just giving a touch on this on topic. So if you see here, this in this layer 3 is going to transmit packets between networks and determines the best path. So this happened at the layer 3. Layer 3 पे क्या होता है कि ये decide करते हैं,
पहली तो बात ये मैंने आपको बताया कि जो आप ईमेल आप लिखते हो is not in the digital format, is not alphabetic format or alphanumeric format is going to transport it on the network. It's going to be converted into the bit and bytes or maybe signals, and it depends what kind of device you're using to transport the message, right? आपने देखा होगा रेडियो वायरलेस भी होता है, डिफरेंट वॉइस किस्म के मैसेज भी होते हैं. आप पहले ज़माने में फैक्स होती थी, टेलीप्रिंटर होते थे, they use the signals. So now we have a computer, we're using the different way of transporting the messages. So layer 3 is actually converts your message into a packets. So let me show you how. So this is the actually definition for your reading. You can layer what happened at each and every layers. So it's going to make more sense too. So this layer determines, I'm talking about layer 3 now. This layer determines how data is sent to the receiving device on this layer, right? It is responsible for packet forwarding. See, these are the keyword: packet forwarding, routing, and addressing. So let's see how that is happen. So think about this envelope. We people in the past, if you remember, we used to use this kind of message sending things like किसी को खाता लिखना. तो इसके अंदर जो है, लेट्स सी कि इसके अंदर ये जो है वाइट पेपर, आई एम गोइंग टू से इस मैसेज जो आपने लिखना है वो इसको मैं डाल के आपने भेज दिया. इसके ऊपर दो चीज़ें होती हैं. मुझे याद है कि हम क्या करते थे, उसके फ्रंट पे जब एड्रेस लिखते थे तो वो एड्रेस दो किस्म के लिखते थे. एक तो सेंडर का एड्रेस होता था जिसको हम भेज रहे हैं, और एक होता था, एक कॉर्नर के अंदर लिखते थे हमारा एड्रेस भेजने वाले का, सेंडर्स एड्रेस, एंड जिसने रिसीव करना है उसका एड्रेस. ये दो एड्रेस हम लिखते थे. आपको याद है किसी को? Yes, sir. अभी भी ऐसे ही होता है. ऐसे ही अभी भी ऐसा मैंने कहा, अभी तो वो ज़्यादातर लोग ईमेल भेज देते हैं या तो SMS कर दिया किसी का, तो बर्थडे और डेथ के मैसेज भी वहाँ से ही जाते हैं. इसलिए मैं कह रहा हूँ. सो दिस वाज हैपनिंग इन द पास्ट. So how this happen nowadays? The packets are the fundamental units of information transport in all modern computer network. So the complete envelope जो अभी मैंने दिखाया आपको, और उसके अंदर जो वाइट पेपर था जिसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ, this complete thing is called a packet. इसको उसके साथ एनालॉजी में बना रहा हूँ. So this is a complete envelope and the message within inside the envelope is called packets. So this is how it look like. For example, we have a 10,000 bytes of message. So it has two parts. One is called body. So the right hand side is the body, and the left hand side called header. So this is the architecture of the packets. So headers contains what? Two things. It contains sender's IP address and the person who I'm receiving this message, his IP address. But on the right hand side, what happened, if I have a length of 10,000 bytes of this data, so it's going to break down this 10,000 byte of data into small chunks. So let's see, 2,500 bytes, this 2,500 bytes, this 25, all together they are 10,000 bytes. So this packets is going to convert it into these chunks, or fragmented, he is saying fragmented into these chunks, but each chunks contains the headers information. This is how they now, this packets, this chunk belong to this and this and this, and they have a starting and starting of the packets and the end of the packets information also in the headers. If one of the packets is missing from this, you will get the error on the receiving end, because this is not the complete message or something. अभी अगर आपने किसी के wrong email address अगर आप टाइप करके उसको मैसेज भेजें तो you will get response back.
तो वो जो रिस्पॉन्स होगा वो आपको वो नहीं लिखा होगा जो आपने लिखा था. एक्चुअली देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ बाइनरीज एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो ही इज सेइंग समथिंग्स रॉन्ग, ईदर द एड्रेस इज रॉन्ग or maybe its address could not process because of the network problem. So you have to understand the packets is a kind of envelope. Envelope have two things. It had a message, original message inside, and it has information of the senders and receivers. So in the computer format is called the packets. Packets have header, and headers has all the information about the senders and receivers. The packet header is a portion of IP Internet Protocol packets that precede its body and contain addressing and other data that is required for its. So this is what it's saying. In the header we have IP address of the senders and the IP address of the intended receivers. So any question in the previous topic? Hello. Yes. Sir, can you please repeat this? Actually, आपकी आवाज़ चली गई थी बीच में, तो इसको प्लीज रिपीट कर देंगे. पिछले वाला? ये वाला? जी प्लीज शुरू से इसलिए आवाज़ चली गई थी. यहाँ मैं कह रहा था कि ये जो जैसे मैंने एनवेलप की आपको एग्जाम्पल दी थी कि उसके अंदर जो मैसेजेस होते हैं वो जो वाइट पेपर है जिसके ऊपर आप मैसेज लिख के उसमें एनवेलप में डालते हो, दैट्स कॉल्ड द बॉडी ऑफ द मैसेज इन दिस फॉर्मेट. तो जो एड्रेस जहाँ पे आपने एड्रेस लिखा है एनवेलप पे, दैट इज अ हेडर हियर, राइट. सो व्हेन यू हैव लाइक 10,000 बाइट्स जो हैं वो अगर आपने भेजने हैं तो वो क्या करते हैं, द ट्रांसपोर्ट लेयर एट द लेवल 3 दे गोइंग टू ब्रेक डाउन दीज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल चंक्स, स्मॉल पीसेस के अंदर इसको ये करते हैं. 10,000 divided by 4, 2,500 bytes each. It's not going to divide in a 4 or 5. I'm just giving you example. They're going to break down in small chunks. तो हर जो उसका जिसके अंदर वो छोटे छोटे पीसेस करेगा इसके, उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन जो हेडर इन्फॉर्मेशन गोइंग टू बी अटैच्ड, क्योंकि ये दे गोइंग टू ट्रैक ईच अदर. दे नाउ देयर वर द 4 पैकेट्स, 4 चंक्स we needed to complete this message. If any message is missing, if any message is not processed, you will get the error. So header के अंदर क्या information होती है, इसके अंदर आपका sender जो send कर रहा है उसका IP address है या email, आप दिमाग में रखेंगे email address है, और जिसको आपने भेजना email address actually they are eventually email address जो है वो जब आप ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने मैसेज को, सो ईमेल एड्रेस एक्चुअली पॉइंटिंग टू समथिंग डिफरेंट सर्वर. तो वो सर्वर क्या आता है, वो सर्वर को आईपी एड्रेस पॉइंट करेगा. वो ईमेल एड्रेस के आगे जो प्रोसेस चलता है, इट्स अ लेंथी प्रोसेस, हाउ दे कन्वर्ट योर ईमेल एड्रेस इनटू लाइक द डोमेन नेम एंड द डोमेन, यू नो एट द एंड ऑफ द ईमेल यू हैव .com, .ca, .uk, राइट. तो वो भी एक लेक्चर है जिसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से ये .com को कैसे फाइंड करता है, और फिर एवेंचुअली मेरा www.facebook.com है, तो com क्या करता है और Facebook क्या करता है और www क्या करता है. सो वी हैव अ कंप्लीट एक्चुअली लेक्चर ऑन दैट. तो ये अभी इसके लिए सिर्फ आप याद रखें कि यू आर सेंडिंग द मैसेज, राइट. इन द मैसेज यू हैव हेडर्स, message are converted into the packets, and the packets consist of this. They have a body of the message and they have a headers. And when the second thing you have to remember, those body and headers, they are converted into the small chunks. और small chunks के अंदर जब आप उसको convert करते हैं, each piece of this message will have a information of the headers. Thank you. So now we're talking about the load balance types. How many? There are one is called classic load balancer. Classic load balancer provide basic load balancing across multiple Amazon EC2 instances and operate at both the request level. Request level mean layer 7, and connection level. Connection level mean session layer, right? 6, 7. So
सो दोनों लेवल पे काम करता है, ये लेवल 7 पे भी काम करता है और लेवल 5 पे भी काम करता है. व्हेन कनेक्शन वी टॉकिंग अबाउट कनेक्शन इज लेवल 5. तो तुम लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत नहीं कौन से लेवल पे करता है ये 5 और 6. जैसे वन मे बी इन द एग्जाम दे कैन ask you layer 5 or layer 6 or layer 7 at what layer it function. All you have to remember the layer number. The classic load balance work on 2 layers, layer 7 and layer 5. That's it. Application load balancer route traffic to target within Amazon virtual private cloud based on the content of the request. Okay, just hold on this, क्योंकि इसके ऊपर मेरी 3-4 स्लाइड्स मैंने बनाई हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को डिफाइन कैसे करना है. Then we have a network load balancer. Network load balancer is the best suited for load balancing of transmission protocol TCP/IP and its and transport layer security. So ये आप ज़रा इमेजिन करें कि कोई जैसे टेक एग्जांपल ऑफ facebook.com, राइट, कि फेसबुक के ऊपर पूरी दुनिया से लोग जो है ना वो उसको एक्सेस कर रहे हैं. सो दे हैव अ डिफरेंट सर्वर सिटिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट. सो मैं ये डिफ़ाइन करता हूँ कि मेरी जो ट्रैफिक है, जो TCP/IP प्रोटोकॉल जो लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर वो यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र HTTPS और या HTTP, तो डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोटोकॉल इज़ गोइंग टू distribute the traffic on the basis of the protocol they are using. Let's see, I am coming from Canada trying to access my Facebook page. होगा क्या कि जब मैं अपना टाइप करूँगा, अपना लॉगिन करूँगा, तो मेरे कंप्यूटर से और फेसबुक तक जाने में जो ट्रैफिक का फ़्लो है दैट्स बेस्ड ऑन द IP एड्रेसेस. तो वो क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा, लोड बैलेंसर देखेगा ये IP एड्रेस दिस गाय इज़ कमिंग फ्रॉम कनाडा, राइट. तो ऑन द बेसिस ऑफ योर लोकेशन इट गोइंग टू डाइवर्ट योर ऑल द ट्रैफिक फ्रॉम कनाडा. अगर फिर कनाडा के अंदर आप सिटी की तरफ देखें, टोरंटो से अगर मैं जा रहा हूँ, अगर मैं ऑटोवा से जा रहा हूँ या मॉन्ट्रियल से जा रहा हूँ या लाहौर से जा रहा हूँ या कराची से जा रहा हूँ, सो बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम विच सिटी, तो ये उसको एनालाइज करता है, एनालाइज करके उसको डाइवर्ट करता है अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑन द नेटवर्क, द बेसिस ऑफ वेयर यू कमिंग फ्राम, व्हाट IP एड्रेस इज कमिंग फ्राम. IP एड्रेस का मतलब ये होता है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो IP एड्रेस से कि ये बंदा कहाँ बैठा हुआ है इस वक्त जो मैसेज भेज रहा है. तो वो उसके जो रियल टाइम एनालिटिक्स करने के बाद उस ट्रैफिक को नेटवर्क के ऊपर डिवाइड कर देता है कि ये टोरंटो के लिए है, ये लाहौर के लिए, ये कराची के लिए, ये पेशावर के लिए है. सो दिस इज़ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस लोड बैलेंसिंग इज इन्वॉल्व इन द नेटवर्क. और दूसरा इसके अंदर जो उसने प्रोटोकॉल मेंशन किए हैं कि अगर TCP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, ये UDP, दिस इज़ द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल, डिफरेंट लाइक इट्स TCP/IP आपने पढ़ा होगा, ये UDP भी मेरे ख्याल यूज़र डेटाग्राम. TCP/IP से मोस्टली जो IP एड्रेस आप यूज़ करते हैं 194.64.30.30, दिस काइंड ऑफ प्रोटोकॉल. So it also going to distribute the traffic on the basis of the protocol you are using. अगर आपको जब आप करते हैं परचेज़ करते हैं तो आप सिक्योरिटी लेयर भी SSL भी एक है जो कि जब आप पेमेंट को यूज़ करते हैं, दैट ट्रैफिक इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैफिक, राइट. सो इट ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्ट यू आर यूजिंग, द प्रोटोकॉल यू आर यूजिंग इज़ गोइंग टू डाइवर्ट योर ट्रैफिक. उसके बाद दो किस्म के लोड बैलेंसर होते हैं, एक को कहते हैं इंटरनल लोड बैलेंसर और एक को कहते हैं इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर. अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था कि व्हेन वी क्रिएटेड द EC2 इंस्टेंस वी हैव अ प्राइवेट सबनेट, वी हैव अ पब्लिक सबनेट. डू यू रिमेंबर दैट बिफोर आई प्रोसीड? Yeah. Okay,
सो इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर इज द कि अगर आपका जो इंस्टेंस है, जो आपकी वेबसाइट है, अगर वो पब्लिकली अवेलेबल है तो फिर आप इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसिंग जो है ना उसके लिए क्रिएट करेंगे. अगर आपने लोड बैलेंसिंग करनी है ओनली विद इन योर अमेज़ॉन डिवाइसेस, विद इन योर ओन नेटवर्क, विद इन योर ओन VPC, then you have a intranet or internal load balancer. So on the right hand side, if you see this showing you, this is the internet facing. So clients are coming, they hitting this load balancer, and the load balancer is dividing the traffic accordingly. So internal load balancer is same thing, but the only thing that load balancer is available, see in the middle, so this is internal. So all these things, if they are sharing some kind of services to each other, so they will be on the public private network. So the traffic is receiving from the public subnet going through this load balancer to the private subnet. So this is called internal load balancer. Any question? Clear? So this is classic load balancer, and further what is this and how it works. So this operates on the both request and connection level, layer 7 and level 5. The classic load balancer retrieve information such as the network protocol and port number, right? So जब इसको request receive होती है, it will look at the request, and it should look at the what protocol they're using and what port number they are looking for. So जैसे कि HTTP हमने पढ़ा था, उसके अंदर port number 80 यूज़ करते हैं. If traffic is hitting to this one, it will analyze the traffic and it will say, okay, this is for HTTP, and then it will check if I have that port open. If that port is open, then it's going to divert the traffic to that port. तो अगर आपको अगर आप if you're trying to access the application on this machine, for example, you're running the web server, so जब ट्रैफिक आ रही है तो वो अगर आपको ट्रैफिक की रिस्पांस में अगर ये 504 एरर आए, तो इसका मतलब ये है कि जो लोड बैलेंसर है वो तो काम कर रहा है, आपकी एप्लीकेशन डाउन है. सो दिस इज़ द 504 is actually representing your application error. It's not load balancer error. So that's what he's trying to say here. Sir, I have a question. Yes. सर मुझे याद है कि जब हम लोग क्यू पढ़ रहे थे तब आपने कहा था कि डेड लेटर क्यू होता है ना, एक इन केस अगर ट्रैफिक आ रही हो तो वो डेड लेटर क्यू में चला जाता है. क्या इसमें भी कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर ट्रैफिक आ रही हो और वो बैलेंस नहीं कर पा रहा, या इज देयर एनी रूम ऑफ एरर, या ये 100% एक्यूरेट होता है, 100% एफिशिएंट होता है? नहीं, इसका ये है कि देखो, बहुत जब हम किसी आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो जहन में एक पिक्चर आपको बनानी चाहिए. कोई भी सिस्टम जो है ना वो अकेला काम नहीं कर रहा होता. अभी मैं आपको लोड बैलेंसर पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये लोड बैलेंसर इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड विद अदर सॉल्यूशंस. ठीक है ना. देखो, इसके अंदर हमें दो चीज़ देख रहे हैं. मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये EC2 है, ये इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस है. सो दिस इंस्टेंस इज अ सर्विस, राइट? EC2 is a service. We are actually, what we are trying to do, we are integrating with another service called ELB, Elastic Load Balancing. कोई भी सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, दे आर गोइंग टू मेक ए कंप्लीट आर्किटेक्ट. मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई कि एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट कैसे बात कर रहा है, उसने कैसे इंटीग्रेट किया. सो दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट सिस्टम कॉल्ड इलास्टिक लोड बैलेंसर, राइट? सो दिस इज EC2. So EC2 is independent. Now they are working together. ये दोनों मिलके जो ना सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं. मैं कहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो मुझे लोग कंप्लेंट करते हैं कि तुम्हारी वेबसाइट बहुत स्लो है. So then I have to find a solution for that. The solution is
आई हैव टू ऐड मोर सर्वर, और मैं सर्वर भी मुझे लेने हैं 4 और मैंने रख लिए। फिर मैं चाहता हूँ कि ये इसको अब मैंने 4 सर्वर तो ले लिए हैं, लेकिन इन पे लोड कैसे मैंने डिवाइड करना है। देन आई नीड अ लोड बैलेंसर एंड अदर सर्विस, सो दे वर्क hand to hand. That's called integration and implementation of the different solution and create one architect for one solution. One solution के मेरा बिजनेस है, मुझे अपने बिजनेस के लिए सोल्यूशन चाहिए, तो वो तो होगा एक कंप्लीट आर्किटेक्ट। उसको कहते हैं क्या कहते हैं, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट। मुझे अपनी एंटरप्राइज के लिए आर्किटेक्चर चाहिए। वो आर्किटेक्ट जो है वो अंदर से फिर स्मॉल पोर्शन है मेरी एंटरप्राइज के। फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना प्रॉब्लम है, एचआर का अपना प्रॉब्लम है, तो उसके बाद मैं अगर ई कॉमर्स का मेरा बिजनेस रन कर रहा हूँ तो उसका अपना प्रॉब्लम है। सो ईच कंपोनेंट ऑफ द एंटरप्राइज दे हैव their own entity, they have their own domain, and for each entity and domain we need a different solutions. So this is, I'm saying, if somebody is running the business and think about the Facebook all over the world, कभी आपको कंप्लेंट बहुत कम ही होती होगी, रेयर चांसेस है कि आप अपनी you trying to log in and you having any problem. तो वो कैसे उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, वो ऐसे मेंटेन किया हुआ उन्होंने। They have a lot of servers, maybe 100 and 1000 of servers running, and before and in front of those servers they have elastic load balancer. Okay, thank you sir, clear हो गया काफी। Within SQS, that is one of the solution, that is one of the thing for messaging. This is we talking about the load balancing. अब ये जो load balancing, हाँ, जो मैं मिस कर रही हूँ यहाँ पे, वो ये था कि इस load balancing के पीछे भी कोई चीज़ है। अब ये हो क्या रहा है कि इस लोड बैलेंसर के ऊपर एक और चीज़ है, उसको हम कहते हैं क्लाउड वॉच। ठीक है ना। अब मैंने ये एक इलास्टिक लोड बैलेंसर भी मैंने लगा लिया, मैंने इसी सर्वर भी ले लिए, मेरे वेब रन कर रही है, लेकिन आई नीड समबडी हु शुड बी वॉचिंग ऑल दिस, राइट। मुझे ये कोई चाहिए बंदा जो ये सारा सिस्टम को वॉच कर रहा हो, देख रहा होगा ये इस फंक्शनिंग प्रॉपरली, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए फिर क्लाउड वॉच है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो क्लाउड वॉच में क्या होगा कि क्लाउड वॉच क्या करेगा, वो इसको मॉनिटर करेगा, इस सारे सिस्टम को यहाँ से बैठ के। उसको इसका भी पता है और ही इज़ आल्सो मॉनिटरिंग दिस वन, ये सबको वॉच कर रहा है। इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग इज़ गोइंग टू गेट द मैसेज। ये जो मैसेज रिसीव करेगा ना, एरर जो भी मैसेज रिसीव करेगा, इट गोइंग टू सेंड द ईमेल। रिमेंबर मैंने एक सिनेरियो बना के दिखाया था कि ये क्लाउड वॉच क्या करेगा, ये ईमेल भेजेगा टू द कंसर्न पर्सन हु एक्चुअली हैंडलिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, इज कॉल्ड एडमिन। एडमिन विल रिसीव द मैसेज, ठीक है। तो एडमिन क्या करेगा, फिर उसको चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, एंड देन ही गोइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम। दूसरा आगे जो इसके बाद हम टॉपिक पढ़ना है, एक क्लाउड वॉच पढ़ना और एक पढ़ना है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग वो क्या है कि अगर ये सिस्टम मेरा डाउन चला जाता है, लेकिन मेरी जो बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मुझे हर वक्त 4 सर्वर चाहिए, 4 इंस्टेंस चाहिए, आई नीड 1 मोर। तो फिर क्या होगा, मैं फिर यहाँ तो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, मैं जाके मैनुअली अंदर जाऊँ, मैं जाके कोर्स सर्वर वो इंस्टेंस क्रिएट करूँ, या जो ही ये क्लाउड जो है जो मैसेज पिक करता है कि ओके 1 सर्वर इज़ डाउन, राइट, so then it going to automatically create 1 more server. There's another functionality we're going to talk about, auto scaling. So the moment it get the error, okay, one of your server is not responding, it's not working, it's not healthy, so it's going to add 1 more machine. So then auto scaling and other services which we're going to add to this architect. So application load balancer is also called intelligent load balancing. See the previous one, the classic one, we have जो भी traffic आ रही है, that is going to be distributed among all these 4. So this is sometimes को कहते हैं कि dumb
elastic load balancer is not applying any intelligence. All is doing, taking the request and distributing among the available instances. That's it. That's how it's doing. That's called elastic load balancing. इसके अंदर थोड़ा सा ये है कि this is called intelligent load balancing. How it is intelligent? It work on the layer 7. Layer 7 क्या है? Application. एप्लीकेशन लेयर है. एप्लीकेशन लेयर पे ऊपर क्या होता है? यू सी द ट्रैफिक इज़ कमिंग फ्रॉम दिस थ्रू टाइप. लाइक मैं ब्राउज़र से आ रहा हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट का नाम डाला और उसको मैंने हिट किया आपके सर्वर को. सो आई एम यूजिंग दिस प्रोटोकॉल HTTP एंड HTTPS. दे आर टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स. वन इज़ सिक्योर, वन इज़ नॉट वेरी सिक्योर. तो अब ये क्या करेगा? अब इट विल लुक एट द ट्रैफिक वेयर इज़ कमिंग फ्रॉम. So according to that is going to divide this traffic on this server. If HTTPS जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, फर्ज करें HTTPS, और HTTP ट्रैफिक जो है ना वो यहाँ चली जाएगी. This is he going to analyze and converting those traffic towards the identified servers on the system. और इसके अंदर ये भी है, फॉर एग्जांपल द लास्ट सीज सपोर्ट पाथ बेस्ड राउटिंग. सो फर्स्ट वी सा द कंटेंट बेस्ड राउटिंग. इफ द कंटेंट इज लाइक HTTP HTTPS, then is going to divide that. The second option it has is a path based routing. Let me show you what the path based routing is. So we already discussed like in load and network load balancer are suited for the load balancing of TCP traffic where extremely performance is required. Operate at the layer 4, which is a transport layer. Network load balancers are capable of handling millions of requests per second. So think about Amazon, think about Facebook, the million of requests. So the job it is to while maintaining the low latency. ये नहीं चाहता कि आपको रिस्पॉन्स जो होगा वो स्लो हो. उसके लिए फिर क्या करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन किया कि यू हैव ट्रैफिक इज डिवाइडेड बेसिस ऑन द इनकमिंग ट्रैफिक. कहाँ से आ रही है, कौन कर रहा है, उसको डिवाइड लोड बैलेंसर जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द. तो दिस इज़ फॉर द एक्सट्रीम परफॉर्मेंस. एक्चुअली एक्सट्रीम परफॉर्मेंस की जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक हो, आपकी बहुत ज़्यादा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आर हिटिंग एट द सेम टाइम. तो उसके लिए ये फिर नेटवर्क लोड बैलेंसिंग जो है ना वो यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली आई एम शोइंग हियर कि कौन सी कहाँ पे कौन सी लेयर पे कौन सा काम करता है और हाउ they have some common areas as well. So the application load balancer and the classic load balancer, they both work on the presentation layer as well. See here HTTP, HTTPS. So here also they work on the level 4. So this network load balancing and the classical load balancing, they also work on this layer 4. So this is HPV, health check, cloud watch, logging. I'll show you all this in next slides. So now if you have any question and you don't understand the flow of the traffic, then ask me now, because we are going to hit the advanced topic. Okay. So let's talk about the health check, how the health check happen. So let's see, we have a 3 instance and the user sending the request, and every instance is in a good shape, they are running good. The moment so this is called in service. So these all 3 of the systems are healthy and they are in service. So if one of these servers goes down, the traffic will be converted to the healthy one. So how they do this, how they check the health, whether it's up and running or not. Let me show you. When you create the load balancer, here they're going to ask you these questions. So the question is
actually here the register I have to tell you something about this before I go. So क्या होता है कि जब आप क्रिएट करते हो लोड बैलेंसर, तो लोड बैलेंसर को आपको कुछ चीज़ें बताना पड़ती हैं. आपको बताना पड़ती हैं कि आप किस बेस पे लोड बैलेंसिंग कर रहे हो. तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मैं इंस्टेंस बेस पे कर रहा हूँ. देन दे कैन आस्क यू ओके देयर अदर ऑप्शन आर आईपी एड्रेस, जैसे कि नेटवर्क का हमने बताया कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है या कोई और प्रोटोकॉल है, तो आईपी एड्रेस के बेस के ऊपर करना है आपने, तो देन यू कैन सेलेक्ट दिस वन. यू कैन आल्सो सेलेक्ट द लैम्डा फंक्शन, क्योंकि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि जब आपने लोड बैलेंसिंग करनी है, लोड बैलेंसिंग के लिए आपने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है कि उसको लॉजिक वहाँ बिल्ड किया हुआ है, यू कैन आल्सो सेलेक्ट द लैम्डा फंक्शन हियर. सो देन यू कैन, अब फ़र्ज़ करें मैंने आपको किसी को मैंने कहा कि ये चॉकलेट्स हैं और ये आपने किस बच्चों में तकसीम करनी है, देन आई हैव टू टेल यू कौन से बच्चे, राइट. सिमिलर द कॉन्सेप्ट एक रजिस्टर और डी रजिस्टर्ड इसी टू इंस्टेंसेस कि मुझे बताना है इलास्टिक लोड बैलेंसिंग को कि किस इंस्टेंस के लिए मैं लोड बैलेंसिंग कर रहा हूँ, और जिस इंस्टेंस के लिए मैं लोड बैलेंसिंग कर रहा हूँ आई हैव टू रजिस्टर्ड दोज instance with the load balancer. If you go to the previous slide, so these three instances are registered with this load balancer. That's how he is sending the traffic to these instances. If it doesn't have a record of this instance into his in his database, it is not going to send the traffic to this one. So the process of doing the registered or deregistered mean adding the system to the elastic load balancer. So they know where to send the traffic. So let's see here. So we have this is the cluster, this is the group of instance, this is the just one website, and this is the lambda function. So we can add this system to the lambda elastic load balancer. Lambda, I'm sorry, I'm adding this information to the elastic load balancer, so they can they can distribute the traffic among this one. So that's called registered or deregistered. This is the process. Registering an EC2 instance mean adding it to your load balancer, and the same thing like if you are unhealthy is going to be deregistered. The load balancer continuously monitors the health of the registered instance in it enable availability zone. So let's see how it. So अब यहाँ पे जो previous slide में मैंने दिखाया था कि हमने ये select कर लिया. Let's see, I created the name of my elastic load balancer is biz lb, right? So I'm doing this on the instant basis. So इसके अंदर मुझे जो प्रोटोकॉल मैंने सेलेक्ट किया वो HTTP है, which also known as इसको इस यहाँ पे HTTPS और AT. Also you will see some places this called is the listener. So your traffic is being listened by the elastic load balancer on this port. So here's a health check. What happened? So before sending the traffic to any instance, elastic load balancer do these things. He check the health of the system, if it's live, it's running, if it is not. So let's see, we have a website, and how we check the health. क्या होता है कि एक यूटिलिटी है, उसको हम कहते हैं पिंग. I'll show you in a moment. पिंग का मतलब होता है, मे बी some of you already know what I'm talking about. तो पिंग का मतलब कि मैं यहाँ से कुछ पैकेट्स भेज रहा हूँ इस सर्वर को, and I'm expecting the response in a millisecond from this website. So I'm pinging this server, we call pinging. I'm pinging this web server, and the next thing should happen, I should get the response. If I don't get the response, that means this server is not live. This is not healthy. This is not workable. This is not operational. So what ping does is measure the round trip time. It's echo back to the source. When I send, hey, hello, hi, are you there? I should be getting the message, yes, I'm here. So let me show you. सर दिस इज एग्जैक्टली जो पबजी में मसला होता है हमें पिंग का, जो पबजी मोबाइल हम खेलते हैं. मैंने कभी खेली पबजी. Let's see, I'm going to ping. It's a demo. 8.8.8.
This is IP address I'm using. Anyone know what is 8.8 is? No? So let's see what I get here. See, I'm getting the response right away. That means this system is running. So TTL, time to live. So I'm getting this message. So that means this system is up and running. This is how they check this system, if it is up and running, if it is live. So if you are curious to know what is this, 8.8 is, this is Google. Did you see that? So this server is alive. Any question? So what time is it? So it's 11:17. Do you want me to continue? सर बाकी सारों से पूछ लें, मतलब मुझे तो कोई मसला नहीं, यू कैन कंटिन्यू. This slide. अब ये क्या है, जब मैं हेल्थ चेक कर रहा हूँ तो हेल्थ चेक में आई हैव टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन कि किस तरह हेल्थ चेक करनी है. तो द फर्स्ट इज हेल्थी थ्रेशोल्ड. इन दिस हेल्थी थ्रेशोल्ड आई हैव टू टेल द कि कितनी दफ़ा इसको चेक करना है बिफोर डिक्लेयरिंग दिस इज़ ए हेल्थी. तो मैंने यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है 5 लिखी हुई है, तो द वैल्यू कैन बी बिटवीन 2 and 10. एटलीस्ट मुझे 5 टाइम ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए इससे. सो इन द हेल्थ चेक पोर्शन वी हैव टू डिफाइन सम वैल्यूज़. तो पहली वैल्यूज़ तो ये है कि वी हैव टू टेल द सिस्टम कि एटलीस्ट इट शुड बी, इफ़ यू चेक दिस सिस्टम, एटलीस्ट चेक 2 times or 5 times बिफोर डिक्लेयरिंग इट इज़ ए हेल्दी, राइट. एक तो ये वैल्यू है. दूसरी वैल्यू ये है कि द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव हेल्थ चेक फेल वर रिक्वायर्ड. अगर ये 2 दफ़ा फेल हो जाता है तो फिर इसको आपने कहना है कि ये अनहेल्थी है. मे बी यू ट्राई सेकेंड टाइम इज अप एंड रनिंग, राइट. सो आई डिफाइन द वैल्यू ऐसे 2 दफ़ा इसको चेक करो. अगर तो वैल्यू इसकी अगर स्टिल इज डाउन देन डिक्लेयर इज अनहेल्थी. देन आई से द अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकेंड ड्यूरिंग विच नो रिस्पॉन्स मीन अ फेल. तो फिर मैं टाइम आउट किया है कि अगर आप उसको पिंग करते हो और आपको जवाब नहीं आता विद इन दैट मैनी सेकेंड, देन डिक्लेयर इट अनहेल्थी. द लास्ट वैल्यू इज़ दिस इंटरवल. जब मैं पहला जो मैंने हेल्थ चेक किया था एंड फर्स्ट हेल्थ चेक एंड द सेकंड हेल्थ चेक, how much interval there should be, how much gap there should be. So I'm telling 30 second wait karo and then send the second request. So we can know that is healthy or unhealthy. So this kind of value we have to define here when we are creating the elastic load balance. Any question? Clear? So there is a concept called cross zone load balancing. So here is a scenario where there's a no cross zone load balancing is. So in order to understand what is cross zone load balancing, you should know what is, if we don't have cross zone load balancing, what's going to happen. So client is trying to access the system and they are using, see this in another service I introduced here, Route 53. So it's a Zenith for you. I'm just trying to introduce it. See, we have a load balancer, we have a system here, EC2 instance, and then before that I have AWS Route 53. Route 53 is the service which actually converts the DNS name, यानी कि आपको domain name को IP address में convert करती है. This is one of the function of this AWS 53.
So they are sending the traffic to Route 53. They're calling www.facebook.com, and now it's going to convert this message into IP address, and we have defined the 50% traffic is going to this one. So this server, and the 50 is going to this server. So this is how we have configured कि 50% जो ट्रैफिक आएगी ना वो अवेलेबिलिटी जोन ए के लिए है, और यहाँ पे जो है ना 50% जो बाकी की जो 50% वो अवेलेबिलिटी जोन में बी में जो मेरा वेब सर्वर है. आई हैव these all the server running the same applications, same thing, same website, right? So one in availability zone B, one is in A, and 4 in A and 1 in a B. So this is how the distribution of the traffic. So in this case, we don't have a cross zone load balancing. So let's see what happened in the cross zone. So this is a no zone load balancing scenario. So now if I click here, so now the traffic is divided between all of these 5 web servers. So it's crossing the zone and going to another zone. That's what it's doing. It's sending the traffic from one zone to another zone and going to equally divide. See, 20% each. Make sense? Yes, sir. So basically, it's sharing the load. Load share कर रहा है उधर उसमें. लेकिन सर ये कंफ्यूजन यहाँ पे आ रही है कि ये कब हमें पता चलेगा कि क्रॉस करना है, क्रॉस जोन वाला करेंगे या विथ क्रॉस जोन करेंगे या नो क्रॉस जोन. ये डिपेंड्स ऑन हेल्थी उसकी चेक के बाद. हाँ, ये है इसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ये हैं कि ऑलवेज हैव यूर क्रॉस जोन अनेबल्ड. हमेशा इसको अनेबल्ड ही रखो. ये है बेसिकली. But you do have an option where you want to manage your server on different way. Let's see the server in France. They have a different people sitting there and they are monitoring. So they don't want a cross zone, cross region traffic. So it depends on scenario, different scenario. They will tell you actually. The customer going to tell you. मैं नहीं चाहता कि मेरी जो ना cross zone load balancing मुझे नहीं चाहिए. So this is their option. But you should know what the difference between no cross zone and cross zone. So I'm going to do the demo on it. Are you ready or do you want to take? Then one more question. Can you please go to the previous slide? एक question पूछना था मैंने. Sir, sorry अगर आप थक गए हैं. I'm so sorry. थक्का तो हूँ वैसे. अब पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ. ओके हियर जी सर, ये दोनों क्रॉस जोन एंड नो क्रॉस जोन के सारे वीपीसी के अंदर है, यानी ये पब्लिकली कोई नहीं एक्सेस कर सकता है इसको. No, see, I show you these two clients are coming through the internet. These two elastic load balancing are internet facing. Remember I told you there's two kinds. Yes, you told. Yes, you. Internet facing or internal facing. So see, when I show you somebody's coming from outside, so this is obviously, and using the DNS resolution here, and you're solving the DNS name into the IP address, so they're coming from the outside. The VPC is my VPC, a private VPC, which I have given the public access to this elastic load balancer has public access. So all the traffic coming from the public is hitting this server first, elastic load balancer first, and then it's going to distribute accordingly. Okay, now I got it. Right? Yes, I got it. Okay. So next thing is a demo. You want me to do the demo now or you want to do it in the next class? Can we do it now, please? Oh, pardon? सर अभी कर लेते हैं. I mean बाकियों से पूछ लें. I think अभी कर लेना चाहिए क्योंकि अभी फ्रेश पड़ा हुआ है तो it will be easier to understand. Okay.
Yeah, I agree with Hamza. चलें ठीक है, करते हैं. तो आज मैं जब भी मैं ये कर रहा हूँ साथ में आपको आपका नॉलेज भी चेक करना है मुझे. सो लेट्स सी, आई एम ऑन द EC2 डैशबोर्ड फर्स्ट. ठीक है ना, मैंने 2 सर्वर क्रिएट करने हैं. ठीक है, इसके अंदर, और 2 जब मैं सर्वर क्रिएट करूँगा, डिड आई से दैट समथिंग इन द स्लाइड? यस, आई said I'm going to do this. So I'm going to create 2 web servers will be running at the website. Then I'm going to create the load balancer, which is going to be a classic load balancer. So let's do this. So मैंने क्या किया था इस टाइम बचाने के लिए, मैंने क्या किया कि मैंने एक सर्वर को मैंने पहले आई लॉन्च द इंस्टेंस यूजिंग द AMI. ठीक है ना, जो नॉर्मल तरीके से हम करते हैं. तो मैंने उसको लॉन्च करके उसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें वेब सर्वर इंस्टॉल किया, अपनी वेबसाइट इंस्टॉल की. करने के बाद व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड द AMI. सो एवरीबडी नो दैट यू कैन क्रिएट द AMI, you can create the snapshot. Remember that? Yes. Yeah. So I created the AMI. Here is my AMIs. So these two, मैंने जब वो इंस्टेंस को हमारी आई क्रिएटेड द इंस्टेंस, आई रन द इंस्टेंस, देन व्हेन इट वाज रनिंग आई स्टॉप इट एंड देन आई मेक द AMI. सो इस AMI को अंदर मेरी हर वो कॉन्फ़िगरेशन जो मैं चाहता था वो मैंने सारी इसके अंदर ऑलरेडी सेट कर दी है. अब मैं जब इंस्टेंस लॉन्च करूँगा, आई जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस and I will get all the configuration. I will have my web server running and everything will be running because I took the snapshot, I took the AMI. So let's watch it. So I'm launching the web Bisvaria 1 demo. This is the, I'm using the AMI which I have created and saved here, and using this AMI I'm going to launch the EC2 instance. So here I'm selecting T2 micro, and let's see, I define the East 180. Everything looks good. So next, I'm okay with this storage. Next. So let's see, name. So here he is asking me security group. So I have an existing security group. It is the security group. In this security group, I have defined the protocols: HTTP, TCP, and AT. Right. Also, the another one is called SSH. Is 20 port. Okay. So I have a. Remember, we need 2 keys. One is secure key, one is private key. So I'm using my private key here. It's already there. So instance is being launched. Let's go and launch the second one. Oh no, not from here. So I'm going to AMI. So this is my second. I'm going to launch this one. Same thing. So what was that? This demo 2. So I'm selecting my security group and I'm launching it. I'm using my secure key. So now these 2 instances are in the process of being launched. So let's go and launch the C. Under this EC2 you have option called load balancer. Load balancer.
Then we have auto scaling. That's our next topic. So in the load balancer, I'm going to create the load balancer. So we have three kind of load balancer: application load balancer, network load balancer, and classic load balancer. Let's start with the classic one. So I have to give the name like base LB classic. Oh, I thought it's going to take the name. Let's see. Okay. So here you see the option, create an internal load balancer. If I want to create an internal, then I have to check this one. So I'm not creating internal, I'm creating internet facing. So existing security group. Now see it's saying next health check. So here I'm going to do the health check configuration. I say HTTP protocol, port number 80. This is the file I want to check. If this file is available, this file is like my web page. If this file is available, then it is healthy. It will display this one. Now I'm setting the time for response timeout. Let's see 2. Interval, let's make it like maybe 10 or maybe 20. And then unhealthy threshold, okay, 2 is good. Healthy threshold is good. Let's put it 3. Okay. See on the right hand side, say next add instance. So now I have to tell this ELB where to send the traffic. So this is the next part. So I cannot do until I see my EC2 systems are running. So I'm going a new tab. So it's saying running. Now these systems are running. So this is the first one, biz server 1. If I take the IP address of this public IP address, copy and paste. See, it is showing me this is BizVaria server 1. Now I take the IP address of the second server. I'm giving this. This is BizVaria server 2. So I have 2 servers running. So now if I go back to my load balancer, so here the next step I can do this because I see they are up and running. So here I can add these 2 machines, these 2 instances. See here. Now look at down there. It's asking you enable cross zone load balancing. So by default, it's already checked. So best practice is always select this enable cross zone load balancing. So this is the connection draining the number of seconds to allow existing traffic to continue flowing. So how for example, if I'm already connected to the system, I should have a 300 second to continue flowing to the server, even if it is unhealthy. So for example, if you already connected and something happened to the system, that is called in flight. So you are already working on that system. So your traffic will be passed on to the server before it going to stop it, before it going to declare unhealthy. So your process will be completed. That's what it's saying. It's going to 300 seconds. Within, if the 300 second process is not completed, you will be disconnected from that server. So tag
So this is the final review. It's giving me option. If I want to make any changes, you can go on the right hand side. This you can edit that. So load balancer creation status is done. Close it. So see, now I have the, once we created the load balancer, it is going to give you DNS name. It will never give you the public IP address or private IP address. Remember that for the exam question. It always create the DNS name, the domain name system, right? So I'm copying this. Remember in the here I copy the IP address, but here I'm copying this domain name server. And watch this, if I put this domain name server here. So let me, for now here, so let's see what happened. If I enter, what I'm missing. Oh no, I'm the wrong side. Where's the DNS? This is the DNS. Why? If I go there, it should be giving me the web page. It's working here. This is working. So other thing I want to show you here, when we were talking about, she asked me how do this system are being monitored here through the CloudWatch metrics. I will find out why it's not actually showing me this. Load balancer is not working. What I'm missing here? HTTP protocol. Let's see security group. Is enabled. If I have to do a troubleshooting, then I will stop there because it might gonna take a while. Instance are there. Okay, let me try again, because I have to check if they were in up and running. Not there. See, now it's working. So what happened? You have to wait for a while. When you see the status, before it was when I tried to use the web server, so it was not up and running. It was in the process of ELB was trying to connect to these servers. So now you see it is server 1. I don't know why it's not showing again. So server 1, if I keep hitting, so server 2 is still not. So now I'm here, I'm not using these IP address, I'm using the server, the load balancing. So anybody, if I link this to you guys in the chat, I want you to click on this. Let me put here in the chat. On your system, if you click on this, see if you can get this to this machine. Yes, sir. हो गया. See, Yes, it's working. so now I'm getting server 2. 1, 2.
1, I'm just entering. So this is how they're balancing the load. First time I hit it, go sending to the server 1. Second time I'm doing this is sending the server 2. So load is being distributed between server 1 and server 2. So next, in the next class, we will do the application load balancing, which is more intelligent on the basis of the content, and it work on the application layer 7. So for this, for today, this is the end of the lecture. If you have any question, please ask me. सर ये इतना ही टाइम लेगा जब हम कभी भी बनाएंगे तो ऐसे ही टाइम लेगा? Actually, let me show you one more thing before I close it. So see, I have 2 system running, right? तो जब मैं मुझे दोनों पे ट्रैफिक मिल रही है, कभी ये मुझे, अब मैं दोबारा एंटर करता हूँ तो कभी 1 पे दे रहा है और फिर मैं दोबारा करता हूँ 2 पे दे रहा है. अब मैं यहाँ जाके एक सर्वर को ना मैं स्टॉप करता हूँ. लेट्स सी व्हाट हैपन. I'm going to stop this server 1. So classic load balance going to equally distribute the traffic among all the registered instances. So we have 2 instances registered with this elastic load balancer. That's why it was sending the traffic to those 2 instances, 1 and 2. If I close this, if I stop this server, so what should happen? Any guess? According to the definition of the cloud, काम नहीं करेगा? काम तो करेगा. Go on Zenith. काम तो करेगा. So सर मैं कहती कि it will go to the next server जो क्योंकि 50-50 है ना. Exactly. So अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया, right? So I'm going to the load balancer again. Let's see the status. ये यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी जब मैं वो नहीं मुझे दिखा रहा था. Let's do the health check. See, on the one it says out of service. So my Bisvaria server 1 is out of service and this Bisvaria 2 is in service. So if I go back, doesn't matter how many time I hit, I will get the same server. So this is how the classic load balancing works. Any question? No? No sir. Okay. So I'm gonna. No sir. तो जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये मुझे बताएं. असल मसला ये है कि लोड बैलेंसिंग होती क्या है. यस सर. बैलेंसिंग करते क्या हैं, कितनी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसिंग, इंटरनेट फेस लोड बैलेंसिंग, इंटरनल लोड बैलेंसिंग, क्लासिकल लोड बैलेंसिंग, एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग, network load balancing. I want you to have a good understanding of this. Yes sir, you explained it really well. अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो मैंने लोड बैलेंसर की अभी आपको डेमो भी दी है, मैं इसको ना, अगर आपने किस ने S3 की वो डेमोस देखी हैं? सर S3 की नहीं देखी, SQS की देखी थी और अभी SNS करनी है. S3 भी देख लेंगे इंशाल्लाह. नहीं, मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, एक असाइनमेंट दी थी कि मैंने 3 S3 के ऊपर ना उसके जितने भी हमने आपको पढ़ाया था, फॉर एग्जांपल क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन ऑफ S3 वर्जन कंट्रोल और S3 के ऊपर कैसे क्रिएट कैसे करते हैं, उस पर ऑब्जेक्ट कैसे लोड करते हैं, वो 3 की लता छोटी छोटी मैंने बनाई थी, ताकि वो होता क्या कि मैं एक ही बनाता हूँ तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, तो वो फिर आके प्ले नहीं करती जाके. तो वो मैंने बना के तीनों अलहदा, साथ में एक असाइनमेंट लगाई थी कि वॉच दिस वीडियो एंड क्रिएट योर ओन बकेट एंड क्रिएट योर एंड थ्रू द रेप्लिकेशन क्रॉस जोन. तो वो देख लें, और उसके ऊपर मेरे ख्याल मैंने कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया था, वो भी आप पढ़ लें. तो इसी तरह मैं इसके साथ भी करूँगा.
तो इसके आगे जो हम नेक्स्ट चीज़ हम लर्न करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग नेक्स्ट क्लास के अंदर, और देन आई विल कवर द ऑटो स्केलिंग, हाउ द ऑटो स्केलिंग वर्क्स. So that's it for this class. So let me know if whenever you guys decide when we can have a catch up class जो मिस हुई है कल, तो वो भी हम कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना लोड बैलेंसिंग का, ये इम्पोर्टेंट था ज़्यादा. Yeah. No. Yes, sir. That's great. यस सर. Yeah, that's very good. तो अब आप डिज़ाइन कर सकते हैं. इसका मतलब है अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो you know where this elastic load balancing going to fit in the architect. ठीक है, that's it. Yes. And if you have any question, ask me now, or you can send me a message. I will look at that. So can I just ask a question? So basically, when we're designing these solutions, say for example, we can integrate elastic load balancer with like Lambda function, and then we can have the root 5.3 that you talked about. So depending on the business needs, we have to know about these different functions or services, and integrate them together to create a solution, right? That's my understanding. Right. So in the application next lecture we will learn, for example, एक वेबसाइट है, उसके दो वर्जन हैं, एक इंग्लिश वर्जन है और एक फ्रेंच वर्जन है. How are you going to distribute the traffic of people coming from French version and people coming from English version? So there's another way of doing this, and that happen at the application layer, HTTPS, where you select the. अगर बहुत सारी वेबसाइट में लिखा हुआ है वर्जन जर्मन भी होता है, फ्रेंच भी होता है. If you select that, then it's going to route all the traffic to the French version of the website. That's called the content-based routing. So content-based routing, for example, जब भी आप लोड बैलेंसिंग करते हैं ना, फ़र्ज़ करें कि आपने एक वेबसाइट पे गए, वहाँ पे amazon.com पे आप गए, आपको एक पेज वहाँ पे डिस्प्ले हो गया आपकी मॉनिटर पे. The next thing you do, you click on the login page. You are not going to necessarily get the login page from the same web server. Maybe it's coming from other server. Then you click on the shopping cart. You are not going to get the shopping cart page from the same web server where you got the login page. It may be you are getting this page from somewhere else. So think like this one. I mean, English version and the pages on the one website have many pages. Every time to click, you are actually requesting the server to give you some information. In response, you get the page. But that response may be not coming from the same server where you logged in. So we will talk about this in what happened in behind the scene. आपको तो यही लग रहा है कि मैंने इस वेबसाइट पे गई, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मुझे ये आ गया पेज, मैंने यहाँ क्लिक किया. No, behind the scenes, this load balancing is in place. This is working. This is sending you the login page from, for example, server. So server 1 and the card page from server 3. So this can happen as well, and you can actually define this kind of criteria in the load balancing कि मुझे कहाँ कि अगर कोई बंदा, for example, I have a website, I have a content and videos. So the contents is coming from server 1 and the images and videos coming from the server 2. So you can also define that. So we'll learn in the application load balancing, because that happened at the application layer level. You can define this kind of criteria. You can define the rules. Actually, we call the rules. You can define the rule. Okay, मुझे ये इस rule if somebody has in their path, मैं कहता हूँ www.bisvaria/image. So those images coming from somewhere else. It's not from the same server. I see. Thank you. Okay, guys. Thank you very much for today, your time. And please let the Fahad know कि आपने कब वो कैचअप क्लास कब करनी है. ठीक है? Okay. Thank you, sir. Okay. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.